Welcome, Pearl. Yes, sir. So good to see you. So, in the November exams are usually the most difficult exam, Yes. and you have scored 1795 in November exams, which are the most difficult exam of the all four exams. Yes. So, it's just shocking. And you don't have any work experience or anything, Yes. just a plain BCom student doing such a good thing. So क्या लगता है what works very well for you? For me, reading thoroughly and understanding the concept is very important. That works really well because it helps to understand the question pretty well, Okay. and it's mostly based on the concept only. CFA is all about that only. How well you practice and how thoroughly you read तो the मतलब अभी curriculum. आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो Yeah, हाउ yeah. यू आर एबल टू विजुअलाइज द कंसेप्ट मतलब आपको वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आई? वो किस तरीके से आपने डेवलप की? वेल इन स्टार्टिंग फ्यू सब्जेक्ट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था अंडरस्टैंडिंग में कि थोड़ा बहुत नया है मार्केट बट एनीथिंग आई फाउंड डिफिकल्ट आई यूज टू वॉच योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगेन दैट पार्ट ओके, एंड आई यूज टू सॉल्व द things in small parts like doing only that reading again and solving that questions again to understand how it really works like the concepts. ओके। तो आई कैन समराइज योर स्ट्रेटजी इज दैट व्हाटएवर इज डिफिकल्ट, watch the Yes. recording in a smaller part, like a concept wise for 15 to 20 minutes, and then read that part again and again so that it gets fitted into your mind. Yes, ओके। perfect. तो आपको लेक्चर अटेंड करके ऐसा लगता था कि ये रियल लाइफ हो रहा है? हाँ, मतलब आई यूज्ड टू आफ्टर लेक्चर यू टोल्ड टू वॉच द न्यूज़ लाइक मनी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल टाइम्स ऑल. सो आई ओके, यूज्ड टू वॉच द मार्केट आल्सो रेगुलरली आफ्टर स्टार्ट जॉइनिंग योर लेक्चर्स. ओके, So sometimes I used to relate with it कि how things are working, how economy is working. No? ओके, ओके, वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। सो आपको ऐसा लगता है सीएफए बहुत प्रैक्टिकल है? Yes, it's all practical. Like everything, I think it's mostly practical only. How how you understand the market and all. ओके, तो It's आपको not क्या लगता है कि embarrassing. एक So फ्रेशर्स 12th पास स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इतना प्रैक्टिकलिटी उनसे बने, नहीं बने, ये क्वेश्चन मार्क आता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को। yes, but like nowadays you have social media and all. You can understand how you interested in finance or not. You can get the basics, and if you find that interesting and very you can come you are capable of it, you can join the CFI. Feel there's nothing like for youngsters or not. Okay, so you will strongly advise the students that don't bother about the practicality. You can cover up through classes and live medias and other aspects. So you can, Yes, groom yourself in that direction. yes, and it's better if you start early. I feel. Okay, so you will advise start at the earliest. Yes, या तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू, तो आपकी जर्नी थोड़ी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं थी, थोड़ी ऊपर नीचे बहुत हो गई थी। तो कैन यू yes, गो थ्रू अस दैट आफ्टर 12th व्हाट वाज गोइंग इनटू योर माइंड, व्हाट मेक यू टू yes. डू सीएफए, हाउ एवरीथिंग यू थॉट अबाउट? Like after my 12th, I started doing actual science like one of my friend was doing. So I ओके, asked him how it is, and also I thought like I can do it. It's all about stats and mathematics, how well you are in it. So I करेक्ट, thought I can do it, so I joined. I gave one paper, CM1, but ओके, I didn't clear. In September I gave in my first year, but ओके, I didn't clear. But I again started studying for it. I thought I will give in April or again. ओके, But while studying, I thought I'm not actually interested in it. It's not a type of study I want to pursue. It's ओके, not a type of career I want to go into. ओके, So I was knowing about CFA from a long time, like since my schooling days. ओके, So I, like one of my friend was doing, I asked her about what CFA is about, what all subjects are there. Then I found like I can do it. It's all about finance. If I want to do a long term career, it's very nice. So I joined in Feb again for the CFA, and then in November I gave the attempt. ओके। तो जब सीएम टू आप जब उसमें फेल हुए और उसके बाद आपने सोचा कि मैं इसमें करियर नहीं बनाऊंगी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं आप डिफिकल्टी से भाग रहे हो और सीएफए में भी डिफिकल्टी आएगी तो आप कोप अप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऐसा कुछ आपके माइंड में ऐसा नहीं हो रहा था प्लस माइनस टाइप का?
एक्चुअली आई थॉट लाइक क्योंकि सबने फिर से बोला था पेरेंट्स रिलेटिव कि एक और बार दे दो, गिव अप मत कर एंड ऑल, सो आई थॉट मे बी आई एम रनिंग लाइक नॉट गिविंग अ सेकंड चांस, बट करेक्ट, देन आई थॉट देर आर like 13 or 14 papers in actuaries. So I करेक्ट, thought if I want to really build a career in it, I have to like think for a long term, and if I'm करेक्ट। not interested, then it's not a use to waste my time, and like after mid I will leave. So I started CFA. ओके, ओके, ओके। तो आपको क्या लगा सीएफए की स्टडीज़ और एक्चुअल साइंस की स्टडीज़ में बेसिक डिफरेंस क्या है? Basic one, there are two parts in actuarial CM1. One is all about fixed income, forward rates, spot rates and all, and second is about annuity, mortality rate and all. So that part was different for me, and that was the only part I was finding difficult. And ओके, I was doing pretty well in like spot forward rates part or whatever practical part was there. So I ओके, thought CFA also has that topic, maybe I can cover it or I will do it. ओके। तो So यू कुड कोरिलेट क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको अच्छा लग रहा था और वही पार्ट ज़्यादा सीएफए में है, तो यू थॉट कि yes, मैं सीएफए के लिए ज़्यादा अच्छी बनी हूँ। yes. ओके, So तो आपकी सीएफए की प्लानिंग बताइए। आपने फ़रवरी 25 में पढ़ाई स्टार्ट की है, एम आई करेक्ट? yes, तो मतलब yes, इट इज़ गुड 10-11 मंथ्स यू हैव टेकन फॉर योरसेल्फ फॉर द स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। आप शुरू से ऐसा ही प्लान किया, आप रश नहीं किया अगस्त के लिए या ऐसा कुछ? नहीं, नहीं. आपको ऐसा डर नहीं लगा आपको न्यूज़ तो कहीं से मिली होगी कि नवंबर एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है और ऐसा-वैसा, Yes. ये सब कहीं न कहीं किसी ने तो बताया होगा आपको? हाँ, मेरी एक फ्रेंड ने अगस्त में ही दिया तो शी वाज़ सेइंग कि शी वाज़ प्लानिंग फॉर नवंबर बट नवंबर इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट एवरीवन सेज. So I thought should I like delay it for the Feb or but I thought maybe it's all about study. If I'm studying well, I'm preparing, I'm having my strategy, I can clear it. So I thought I will give it November. मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? एक तो एक कोर्स में फेलियर थी, फिर उसके बाद सीएफए करना, फिर भी वो भी जान के कि नवंबर डिफ़िकल्ट होगा तो भी आप ऐसा मतलब एकदम लगे रहे, तो ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया आपने? Like when I started like joining the lectures from the Feb, I was getting interested in the topic. I was not just memorizing the things or mugging up. I was understanding the concepts and how it really works. So I ओके, thought maybe I can clear or maybe I can just work hard more. ओके, तो आपका जैसे ही क्लास चालू हुआ तो योर कॉन्फिडेंस गॉट बैक एंड देन यू थॉट कि एवरीथिंग कैन बी प्रोसेस्ड वेल और आप उसको Yeah. कनेक्ट भी करने लग गए। ये सब के Yes. कारण आपको वो लगा। तो आपका यूजुअली स्टडी आवर्स कैसा रहता था? जैसे आपने फ़रवरी से चालू किया तो आप रोज़ पढ़ते थे? क्या क्या आपका शेड्यूल रहता था? In starting, obviously थोड़ा रोज इतना मोटिवेशन नहीं आया. हाँ, But I used to cover whatever I was in the weekend batch. So whatever you used to cover in weekend, I used to study that in the weekday. And ओके, I used to like go with you only. I don't want to keep a backlog. Like वेरी गुड। backlog से थोड़ा, you have that कि अभी हाँ, पीछे रहेगा. So I will leave it for the last moment. So I करेक्ट, thought I will start with you and be there only. ओके। तो आपने ये इंश्योर किया कि आप क्लास के साथ फ्लो कर रहे हैं, कभी भी आपने उसको Yes. ज़्यादा डिले नहीं होने दिया। तो बीच में आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स आए होंगे, कोई फ्रेंड्स की शादी-वादी आई होगी, तो उस समय पे आप कैसे मैनेज करते थे? During the college exam, it was like for BCom, we study for like one day before only. So for 1 week, I didn't study well, but हाँ, after that, I also started again on the back to routine. ओके। तो फिर सीएफए में आपको ऐसा फुल फ्लेजेड वाली पढ़ाई कब से चालू की आपने? I guess after like from July, like I started doing a pretty well study for 6-7 hours. ओके, And ओके, uske pehle I used to like 2-3 hours or sometimes thoda 3-4 hours, not ओके। much. तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि आपने फ़रवरी से स्टार्ट किया, फ़रवरी से जुलाई तक आप रोज़ 2-3 घंटा तो इंश्योर करते थे, पढ़ते थे और एट लीस्ट जो-जो वीक में हुआ है वो कंप्लीट करते चले जाते थे। Yes, फिर जुलाई पे इट्स लाइक यू इंक्रीज़ द आवर्स 6-7 आवर्स और वो सब पढ़ रहे थे और इसके साथ-साथ आप क्लास के साथ के जितने भी कांसेप्ट्स हैं उनको कनेक्ट भी कर पा रहे थे। तो आप वो सबको मार्केट में भी थोड़ा-थोड़ा देखना चालू कर दिए थे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये सब yes, चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा वर्क की, ऐसा अपन लोग बोल सकते हैं? yes, Okay, okay. Now the how is like last moment, last 2 महीना सीएफए में थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। उस बीच में आपके yes. कॉलेज एग्ज़ाम्स भी आए होंगे अक्टूबर के शायद हाँ, होपफुली अक्टूबर के. एंड देन सीएफए एंड देन इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन, ऐसा स्टूडेंट्स थोड़े डर जाते हैं। आपको क्या लगा उस समय पे? Like, I completed my first reading
from in the September first week, my portion was completed with Oh, you. you Yes, and one two subjects I completed from your recorded lectures because like I joined 1 month late. Like fixed income I done from your recorded lectures, so I wanted to complete it by September. And then for 2 months, I did the second reading in 1 month, and I thought maybe now I'm little bit prepared, and I started practicing portal questions and all also for the second readings and subject test also. ओके। I feel तो it helped me really well. तो आप सारे चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट सब टाइम से देते थे? कैसा शेड्यूल रहता था आपका? Uh, if you have taught any one or two reading in the weekend batch, on weekday I used to study that reading. I used to give test. I guess two test almost every reading has. So I करेक्ट। gave that test, and then I used to start with the another reading. First one reading and test. That's how I ओके, did. सो एवरी रीडिंग वाइज़ यू इंश्योर दैट यू गिव द Yes. टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट भी आपने टाइम से दिए थे सारे? Yes. Like during like first reading also you used to take after every subject one test. I करेक्ट। used to give that one two I didn't give. हुँ, I didn't give, but yeah. And in the after second reading, I gave two subject test for all. ओके। तो आपकी ये जर्नी में कोई पॉइंट ऐसा था जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाएँगे शायद सीएफए या पास नहीं हो पाएँगे? Yes, like like before exam, like 1 2 months, I thought defer कर लेती हूँ, maybe थोड़ा सा if November will be difficult. So I thought, but then I thought I can study, I can prepare maybe again and do it well. ओके, ओके। तो मतलब ऐसा था कि माइंड तो घूमता ही रहता है, अपने को अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और ज़्यादा अच्छे से टेस्ट दें तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। Yes. ओके, और मॉक टेस्ट आपने सब दिए थे अच्छे से? I gave. I guess 7 tests were there. I gave 5 tests and two for institute. ओके, तो आपका मॉक में स्कोर अच्छा आ रहा था? In starting, I was in mock in 60s, and हुँ, after that, I got 75 plus or 70 plus. वेरी गुड, वेरी गुड। वो हमने आपको गाइड किया ही था कि शुरू में थोड़ा कम आता है 1-2 मॉक में, फिर बढ़ हाँ, जाता है। यस। तो ओके, मेरा हो गया था बाद में लास्ट तक। ओके। तो आपने जैसे एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपको ऐसा लग रहा था आपका स्कोर इतना अच्छा आ जाएगा? इनफैक्ट आफ्टर एग्जाम आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट लाइक आई वाज लाइक ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट की बस पास हो जाओ, आई गेट द पासिंग स्कोर, बट ओके। आफ्टर रिजल्ट इवन आई वाज शॉक्ड लिटिल बिट। ओके, ओके। तो इट वाज़ लाइक डबल हैप्पीनेस काइंड ऑफ फीलिंग क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम रहती है और फिर बहुत ज़्यादा मिल जाता है यस, तो वो अच्छा लगता है। तो यस। हाउ आफ्टर द एग्ज़ाम यू आर यू नो जब आप प्रोसेस में जाते हैं तब आप कुछ और सोचते हैं और जब प्रोसेस हो जाने के बाद आप अगर पूरा देखते हैं अपनी जर्नी को तो कुछ अलग दिखता है। तो जब रिज़ल्ट आया उसके बाद आपने जब आराम से पीसफुली सोचा होगा तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी जर्नी कैसी रही? क्या चीज़ें और कर सकते थे? क्या ऐड ऑन कर देना चाहिए था आपको? आई गेस एड ऑन की थोड़ा स्टार्ट लाइक वी स्टार्ट अर्ली, वी डोंट डिले एनीथिंग कि लास्ट मोमेंट हो जाएगा, बिकॉज I know like 1 month before just the exam my hand got burnt, so I was like I was not studying for almost 1 or 2 weeks. So I ओह! thought कि मेरा नहीं होगा, but I thought कि मैंने चीजें थोड़ा like मेरा जो छोटे सब्जेक्ट्स थे वही बाकी थे, so I thought कि maybe I can do it. So I feel you should don't keep a backlog and all, be ओके, in तो the flow. आप ऐसा बोलेंगे कि 15 दिन का अपने को स्पेयर टाइम रख के ही प्लान करना चाहिए, ताकि कोई भी इवेंचुअलिटी आए तो आप फाइट कर सकें और फिर उस समय पे एकदम कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए। Yes, तो sir. अगर आपने प्रिपरेशन करके रखी रहेगी तो आखिरी में आप टाइम और डिवोट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, लेकिन अगर फिर वो टाइम नहीं रहेगा तो फिर क्रंच आ जाता है और फिर टेंशन आ जाता है। Yes, that's why. ओके, ओके, ओके। अब अभी आपको कैसा लगता है? मतलब आप अभी इतने अच्छे मार्क्स आ गए, सब कुछ आ गया, तो अभी आपको क्या लगता है? आपको किधर करियर बनाने का है? क्या करने का है आगे लाइफ में? Now I'm planning for level 2 this August mostly. ओके, And after that, if I clear or whatever, I want to do an internship and get a more practical knowledge about how the concept works. ओके। तो आपने पहले प्रेफ़रेंस दिया लेवल 2 को, फिर आप इंटर्नशिप पे जाएँगे, आप ऐसा प्लान कर रहे हैं। Yes. आपको किसी ने ऐसा गाइड नहीं किया कि पहले इंटर्नशिप कर लीजिए और फिर लेवल 2 कीजिए, ऐसा Yes, कुछ? हाँ, हाँ, किया था, but actually I thought कि first I do the level 2, then my college will be also mostly over, like I will be in the last year only, so I can do the internship and manage with college. So ओके। that's why. तो आपने प्रेफ़रेंस दिया कि पहले एक बार लेवल 2 हो जाए तो फिर मैं वर्क पे कॉन्संट्रेट कर लूँ, पहले इतना पढ़ाई करके एक बेसिक मिनिमम बना लूँ। और ये Yes. अच्छा भी रहता है क्योंकि लेवल 2 के बाद फिर आपको जो भी काम मिलता है, इंटर्नशिप मिलती है, वो भी बेटर मिलती है। तो एक
क्वालिटी वर्क भी आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर भी वो Yes. ऐड करेगा। तो आपको अभी लगता है कॉन्फिडेंटली आप अगस्त में दे पाएँगे इतनी जल्दी? नवंबर में अभी आपका रिज़ल्ट अभी जनवरी में आया एंड देन पता हाउ नहीं, I've started like just I have not even completed one subject, so I'm scared. I've not paid the fees yet, so I'm deciding whether to do or not, ओके, if I ओके, could complete or not. ओके, ओके तो प्रिपरेशन चालू हो गई है, लेट्स सी। Yes. डर तो हमेशा लगता ही रहता है, लेवल 1 में भी लगा था, लेवल 2 में भी लगा था, लेकिन लेवल 1 में आपने कितना अच्छा स्कोर किया। तो Yes. व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड विद द होल जर्नी दैट यू वर वेरी कंसिस्टेंट। शुरू से आप जितना वीकली पढ़ना है उतना पढ़ते चले जा रहे थे। आखिरी टाइम पे आपने अच्छे से गियर अप किया। इवन दो आपका एक सेटबैक था लेकिन यू ओवरकम रियली वेरी गुड। मतलब ये मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा आपकी जर्नी का, क्योंकि यंग स्टूडेंट्स को ऐसे ही होना चाहिए कि भाई आपको ट्राई करना है। 1-2 जगह पे कुछ गलतियाँ होगी तो वी कैन कवर अप। ऐसा नहीं है Yes. कि ज़िंदगी बंद हो जाती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं और नेगेटिविटी का क्या ही बातें करते रहते हैं, उससे कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपने कितने अच्छे से एक डिसीजन लिया कि नहीं अभी एक्चुरियल साइंस मुझे इतना सूट नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुरियल साइंस से आपने ये जज कर लिया कि मुझे सीएफए सूट कर रहा है। दैट वाज़ लाइक अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पार्ट व्हिच यू हैव डन। आपको क्या लगा आपकी ये पूरी प्रोसेस में क्लासेस की कितनी हेल्प थी? आपको क्या लगा क्लासेस के कारण कितना सक्सेस हुआ आपका? Obviously, Finacle play a very big role कि I get a recording lecture whenever I used to think कि कोई topic याद नहीं है, because we tend to forget like if we are moving to another subject. So करेक्ट। recording lectures helped a lot to me, हाँ, and the test of Finacle are a game changer. Like it obviously works pretty well. Like there are so many questions in it, and it are pretty good. Like after like out of the box also you can think. So I ओके। think Finacle test also helped me very well. ओके। तो क्लासेस में जो हम लोग कोई-कोई लाइव चीज़ों के बारे में बात करते हैं या डिस्कस करते हैं, आप उससे कनेक्ट हो पा रही थी? आपको लग रहा था कि ये सब अप्लाई हो रहा है? स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था क्योंकि जब क्लासेस आई जस्ट स्टार्टेड, सो आई वाज थिंकिंग कि ये सब कहाँ हो रहा है, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं। सो ओके, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लाइक स्टेइंग कनेक्टेड टू द इकोनॉमी एंड द मार्केट थोड़ा बहुत इन द ओके। साइड बाय साइड, सो आई स्टार्टेड टू कनेक्ट इवेंचुअली। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी हैप्पी फॉर योर जर्नी बेटा। ऑल द बेस्ट। यस, बहुत अच्छा थैंक लगा यू। आपसे मिलके। यू आर रियली यंग, डायनामिक, एकदम एंथुसियास्टिक पर्सन हो। होप रियली यू विल डू वेरी गुड इन योर लाइफ। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके। थैंक यू। यस।